Okay, in the previous lecture, we were discussing about the brittle and ductile materials. Any question from the previous lecture? If anybody would like to ask anything from the stress, strain, or mechanical properties of materials, आप पूछ सकते हो. Okay, let's start with the strain hardening. What is the strain hardening? This is the enhanced property of the material. If a specimen of ductile material is loaded into plastic range and then unloaded, means if in the plastic range you are loading a material from O to E prime and then you are unloading it, then this material will absorb some energy or it will store some energy. So elastic strain is recovered as the material returns to its equilibrium state. However, the plastic strain remains and the material is subjected to permanent set. Means there will be some amount of recovery and some permanent set will occur. So this is the new curve. If you see the first curve A, it is showing you the loading and then unloading. Now the material is in the state of the second curve, that is B. कि जब आप मटेरियल को लोड और फिर अनलोड करते हो तो अब उसके अंदर क्योंकि कुछ परमानेंट सेट आ चुका है नाउ इट विल नॉट स्टार्ट टेकिंग लोड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. पहले वो ओ से स्टार्ट कर रहा था, दैट वाज द ओरिजिन ऑफ लोडिंग. नाउ इट हैज मूव्ड टू ओ प्राइम इन बी फिगर. दैट मींस इट हैज सम काइंड ऑफ परमानेंट सेट. कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन इसके अंदर आ चुकी है. नाउ your curve will start from O prime. जब भी आप इसको दोबारा लोड इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंस्टेड ऑफ O prime होगा. Now if the load is applied beyond the yield A to A prime, the specimen will elongate due to interatomic forces. जिसका हमने पहले कहा कि हम जब भी लोड अप्लाई करेंगे टेंसाइल लोड स्पेसिफिकली तो उसमें कुछ यील्डिंग होगी. ठीक है, तो वो यील्डिंग अभी भी उसी तरह से हो रही है. एज द लोड इज रिमूव्ड सेम फोर्सेस पुल द एटम्स बैक टुगेदर. नाउ इफ द लोड इज रीअप्लाइड, अगर हम इस स्पेसिमेन पे जिसको हमने अनलोड किया था उसी स्पेसिमेन को अगर हम दोबारा से लोड अप्लाई करें, एटम्स विल अगेन बी डिस्प्लेस्ड अंटिल यील्डिंग अकर्स एट और नियर ए प्राइम. कि जो ये ए प्राइम था वहां पे अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट इज ओ प्राइम और यहाँ से आपका मटेरियल इलास्टिक रेंज अब इसकी क्या है, फ्रॉम ओ प्राइम टू ए प्राइम. एंड यील्डिंग इज अकरिंग बिटवीन ए प्राइम टू बी. यहाँ पे यील्डिंग अकर होगी. पहले केस में यील्डिंग कहाँ पे थी, ए. अगर ए फिगर की हम बात करें, जब इनिशियली स्टार्ट किया था हमने लोड तो यील्डिंग वाज अकरिंग बिटवीन ए एंड ए प्राइम. ये वो रीजन था जहां पे यील्डिंग हो रही थी. ये सिग्निफिकेंट चेंज इन डिफॉर्मेशन. In second case, in figure B, yielding is occurring from A prime to B. That means you can say in this case, when material has attained some permanent set or has achieved some permanent deformation, in that case, material's yield point has been increased. ठीक है, पहले वो A point पे था, now it has been increased to A prime. So it can be observed that the new graph, that was graph B, has high yield point, that is a consequence of strain hardening. In a true sense, some energy may be lost during loading and unloading. As a result, slight curves in the paths O prime to A prime and O prime to A prime to O prime will occur. Okay, means आपके पास कुछ, अगर हम तमाम जो उसके तो लॉसेस हैं उनको भी कंसिडर करें तो जब आप मटेरियल को अनलोड करोगे तो इट विल कम फ्रॉम ए प्राइम टू ओ इन अ कर्व्ड मैनर इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ये कर्व फॉर्म में वापस आएगा और जब इसको दोबारा आप लोड करोगे तो फ्रॉम ओ प्राइम टू ए प्राइम अगेन इट विल नॉट गो इन अ स्ट्रेट
line, it will follow some curved path. ठीक है, तो जो ये लॉसेस हैं, इन लॉसेस को अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करें तो ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड मैकेनिकल हिस्टैरिसीस। ऑल्दो हम लॉसेस को इग्नोर कर देते हैं, हम लॉसेस को कंसिडर नहीं करते, वी अज्यूम कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। So strain hardening क्या है? This is hardening of the material because of permanent set. आप कह सकते हो कि स्ट्रेन हार्डनिंग में बेसिकली आप मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर रहे हैं यूजिंग द यील्ड ऑफ द मटेरियल। Now coming to strain energy. Strain energy means any energy related to deformation. कोई भी एनर्जी जो मटेरियल में स्टोर हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, विल बी रेफर टू एज स्ट्रेन एनर्जी। अगर आपके पास जो ये मटेरियल सामने आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, दैट हैज द डायमेंशंस ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, इफ दिस मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू सम स्ट्रेस, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस बिकॉज इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इस नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जब इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगी तो उस इलोंगेशन से जो एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होगी उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। Okay, so energy is basically external work done on the body or internal work of the body. तो external और internal work को अगर आप calculate कर लें, then you can find out the value of energy. अगर मैं फोर्स की बात करूं, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला इफ यू रिमेम्बर, हम वर्क को किस तरह से डिफाइन करते थे? So work was written as or was given by an equation W is equal to force multiplied with displacement. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रही है, इसका दिस product is defining the work done on a body. So we need to know how much force is being applied to the member. हमारे पास एक क्यूब एलिमेंट है, क्यूब एलिमेंट पे जो फोर्स जो स्ट्रेस अप्लाई की गई है दैट इज सिग्मा, एंड सिग्मा इज P divided by A or force per unit area. So from here we can find out the value of force. So force will be sigma into A. If this is the block, now sigma is acting on the plane delta x, delta y. ठीक है, जो इसका प्लेन है, that this perpendicular plane is delta x, delta y. So this force will be written as sigma into delta x, that is the perpendicular area, delta x multiplied with delta y. Because this is normal stress, the normal जो perpendicular area है उससे हम इसको multiply करें. This is the value of force. Now coming to displacement, what will be the value of displacement? Displacement means जो इसमें deformations produce होगी. ठीक है, so deformation को हम किस तरह से calculate कर सकते हैं? We know that epsilon is equal to, or this is displacement divided by formula, displacement deformation per unit length. Here deformation is, if we are calling it D, and length of the segment in the direction of force, because force किस direction में लगी है, this is acting in Z direction, so the length of the element that will be changing is delta Z. So from here D will be written as epsilon into delta
Z. Now we are going to put these two values in the formula of work. Also, one thing important, because load is or stress is continuously increasing. So if it is starting from, if stress is starting from 0 to, because of 0 to F, then F by 2 will be the average force that is acting on the body. Okay, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, हम स्लोली लोड को इंक्रीज करें, सो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एवरेज फोर्स. Now, if we write the equation for W, it will become W into half of force, that is the average force, multiplied with D. So sigma into delta X delta Y, that is the value of force, divided by 2 multiplied with epsilon into delta G. इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर आप कर लो तो दिस इज sigma epsilon divided by 2 into delta X delta Y and delta Z. This is the volume of the element. Okay, delta X delta Y delta Z is now the volume of the element. So this equation will become sigma epsilon divided by 2 into delta V. If this work is the internal energy, and we may call it as, if this is internal energy, we may write it as delta U, that is internal energy. So this internal energy per unit volume is another important quantity, and it is called energy density. We call it as energy, strain energy density. So this strain energy density will be, we designate as small u. So this is epsilon into sigma divided by 2. This is strain energy density. It is also an important mechanical property of the material. Now, if we return to stress strain curve, we said that on the x-axis there was strain, on y-axis there was stress, and there was a point called proportional limit up to which this line was straight. And in the last lecture, we said that this area under this curve, it was defining the modulus of resilience. यही हमने कहा था कि area of the stress strain curve up to proportional limit is modulus of resilience. So this is the same thing. This is the same area, half into sigma into epsilon up to proportional limit. So you can say that modulus of resilience is basically strain energy density. ये दोनों सेम पैरामीटर्स हैं. हमने इसको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पहले कहा था. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी. So strain energy density is basically modulus of resilience,
and it is calculated by half into sigma into epsilon. We can write this equation in other forms as well. We know that sigma is equal to epsilon E. So if epsilon is unknown, we can calculate epsilon as sigma divided by E, and we can rewrite this equation as strain energy density is equal to sigma divided by 2 into sigma divided by E. If you are only given with the stress and you know the material property, that is modulus of elasticity, then you can calculate the modulus of resilience or strain energy density. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में. जो डेटा आपको गिवन है उसकी बेसिस पे हम इक्वेशंस को सिलेक्ट करते हैं. मोस्टली हमें स्ट्रेस पता होती है, स्ट्रेन की वैल्यूज नहीं पता होती, तो हम स्ट्रेन को उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय इट्स इक्विवेलेंट दैट इज सिग्मा ओवर ई. बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. ठीक है, जो आपने सेकेंड इक्वेशन लिखी है, दिस सेकेंड इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. प्रोपोर्शनल लिमिट के बाहर इसको हम यूज नहीं कर सकते. मीन्स यू कैन यूज इट फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल बट नॉट फॉर प्लास्टिक मटेरियल्स. This is another property of the material, that is Poisson's ratio. This is one type of elastic deformation, and this is a change in transverse dimension accompanying axial tension or compression. All flexible materials have the property, if this is the bar and we are applying force at its ends in the longitudinal direction, we are trying to pull it. So this material will be elongating in the direction of force. There is increase in the direction of force, that is positive deformation. This is also positive deformation. But in the transverse direction, there is decrease in its dimensions. This is negative deformation or negative strain. Whenever you are applying force on the member, अगर आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मटेरियल जो है वो इलोंगेट होगा और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कंट्रैक्शन होगी. सो दिस इज सेम एप्लीकेबल टू compression. If we are applying compressive forces, material will be compressing in the direction of force, but it will be elongating in the transverse direction. तो ये जो डिफॉर्मेशन की रेशियो है ट्रांसवर्स टू लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज कांस्टेंट. किसी भी मटेरियल की एक खास प्रॉपर्टी है, मींस के मटेरियल की अगर आपको इलोंगेशन पता है तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप उसकी कंट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग इट्स पॉइसन्स रेशियो. So Poisson's ratio was first introduced by Simon D. Poisson. That is why we call it Poisson's ratio. It was symbolically represented by the letter nu, and we write it as, this is the ratio of transverse to longitudinal strain. So if the force is acting in x direction, let's suppose, and this is y direction. So if force is acting in x direction, this is px,
In that case, this ratio states that the strain in y direction to strain in x direction is constant. So this is lateral to longitudinal strain, ratio of transverse strain to longitudinal strain. Denominator, in the denominator there comes always the strain in which in the direction of force. ठीक है, तो डिनोमिनेटर है वो हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको डिफाइन कर रहा होता है. And this is a negative quantity. There comes a negative sign. Negative sign because if longitudinal strain is positive, transverse will be negative. देखिए एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी स्ट्रेन आपके पास लामहला नेगेटिव होगी. This is for y direction. It might be possible that material is also contracting in z direction. So for that you can also write it as epsilon z, that is strain, transverse strain in z direction to longitudinal strain in x direction, and it will also be negative. Both of these values are constant and it is given by mu. This is the material's property. Up till now, we are known with two properties of the material. One was given by Hooke's law, that was the elasticity, and another given by Poisson's, Simon de Poisson, that was Poisson's ratio. ठीक है, हमें दो मटेरियल की प्रॉपर्टीज अभी पता है, एक इलास्टिसिटी और एक पॉइसन रेशियो. ये फिक्स प्रॉपर्टीज है, मींस इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है. हर मटेरियल की अपनी एक खास वैल्यू होगी. So uniaxial, in case of uniaxial stress, अगर हम uniaxial stress की बात करें, uniaxial means force is acting in one direction only. कि हमारे पास मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, लास्ट में नहीं कि आपके पास फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. इट माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास यूनिएक्सियल केस भी हो और बायएक्सियल भी हो, ट्राइएक्सियल भी हो. सो यूनिएक्सियल मींस फोर्स इज एक्टिंग ओनली इन वन डायरेक्शन. You can apply Hooke's law that states if force is acting in x direction, let's suppose that force is acting in x direction only. So in that case, Hooke's law states sigma x is equal to epsilon x into E. This is a pure case of uniaxial stress. Force was acting in x direction, strain was producing in x direction. Now, because of this force, there must be strain in the y direction as well. Now, coming to the biaxial
state of stress means force is acting in x and y direction. Let's suppose. Okay, let's start with a case when force is acting in or member is stressed in x and y. दो डायरेक्शंस में आपके पास मेंबर पे स्ट्रेसेस आ रहे हैं. कि दिस माइट बी पॉसिबल कि आपके पास मटेरियल में दो एक्सिस पे दो डायरेक्शंस में स्ट्रेस एक्ट करे. So now one by one, if we deal this case, when strain is in the x direction due to stress in the x direction, अगर दोनों आपके पास सेम हो, in that case this equation is useful. Okay, when force is in x and strain is also in x direction. So you can say, if we are calculating the strain only, you can say that if stress is in x and strain is also in x direction, sigma x divided by E. This equation is by Hooke's law. This is for when stress is in x and strain is also in x. ये हमारे पास फर्स्ट केस बनेगा. नाउ सेकंड केस क्या बन सकता है कि आपके पास y डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही हो बट यू आर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन इन x डायरेक्शन. Means for y direction stress we are calculating strain in x direction. This can be calculated using the Poisson ratio. So through Poisson's ratio, we can say that epsilon x is equal to minus nu into epsilon y. ठीक है, y डायरेक्शन में फोर्स है, y डायरेक्शन में स्ट्रेस है और स्ट्रेन हमारे पास किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में. So from Poisson's ratio, we can write that strain in x direction because of stress in y direction is equal to minus nu into epsilon y. अब हमारे पास because the member was biaxially stressed, दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस थी. एक आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन. फर्स्ट केस इज एप्सिलॉन x is equal to sigma x divided by E. This was the case when stress was in the x direction and strain was also in the x direction. मैं कोई member ड्रॉ कर देती हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपके पास ये क्यूब एलिमेंट है and it has x and y directions. So in two directions forces are acting. Means this is stressed in x direction and it is also stressed in y direction. कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे पास एक्ट कर रही है. ये जो हमारा मेंबर है वो दोनों डायरेक्शंस में स्ट्रेस्ड है. So first we have calculated strain in x because of stress in x and then we have calculated strain in x because of stress in y. Okay, तो ये दो आपके पास strains आ रही. Now what will be the net result of strain or total amount of strain in x direction? It will be the summation of both of these strains. Strain in x because of stress in x plus strain in x because of stress in y. We will add up these two values and we will get the result. So this is equal to sigma x
divided by E minus nu into epsilon y. Because now this epsilon y can be replaced by its equivalent, that is sigma y divided by E, because stress and strain both are in y direction. So this is a case of lineation stress. That means equation will become sigma x divided by E minus nu into sigma y divided by E, and we take 1 over E common. This is sigma x minus nu into sigma y. This is strain in x direction because of stresses in x and y direction. दोनों stresses की वजह से जो total strain है उसका magnitude है. अभी हमने एप्सिलॉन x कैलकुलेट किया, आप एप्सिलॉन y भी सिमिलरली यूज कर कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करें, इसी इक्वेशन को आप एप्सिलॉन y के लिए डिफाइन करें, एप्सिलॉन y विल बिकम 1 over e into sigma y minus nu into sigma x. For triaxial state of stress means if this is your element, it is stressed in 3 directions. X, Y, and Z. And this is X, sigma X. This is sigma Y. And there will be sigma Z as well. Okay, now element is stressed in 3 directions. So first we will calculate the value of strain in x direction because of all of these stresses. So strain in x direction, इन तीनों stresses की वजह से strain की value क्या होगी, ये हमने calculate करना. So one by one, if we start writing for both all of these 3 stresses for सिग्मा x, ठीक है. सबसे पहले हम सिग्मा x के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर सिग्मा y के लिए कैलकुलेट करेंगे और फिर सिग्मा z के लिए. एट द एंड वी विल एड अप ऑल ऑफ द स्ट्रेन्स. सो फॉर सिग्मा x, strain in x direction can be calculated using the Hooke's law, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में. सो एप्सिलॉन x will be sigma x divided by E. This is the strain in x direction because of stress in x direction. Then we will find the strain in x direction because of sigma y. Because when we know that now Poisson's ratio will be written as, this is strain in x direction because of stress in y direction. So from here, epsilon x will become
minus nu into epsilon y. And now, because this epsilon y and sigma y both are in same direction, you can rewrite this equation as minus nu into sigma y divided by e. We have replaced epsilon y by its equivalent, that is sigma y over e. Now for sigma z, that is the last case, epsilon x will become minus nu into epsilon z. And this epsilon z will be replaced by its equivalent, that is sigma z divided by e. Now we have three values of strains, sigma x over e minus nu into sigma y over e and minus nu into sigma z over e. We will add up all of these quantities to get the total value of strain. So total strain will become sigma x divided by e minus nu sigma y divided by e minus nu sigma z divided by. So this is strain in x direction because of stresses in x, y and z directions. तीन stresses के लिए जो total strain आपके पास किसी एक direction की आ रही है वो हमने define कर दी है. We can write this similar equations for epsilon y. और epsilon y तो क्या value बन जाएगी? This will be 1 over e into sigma y. Now sigma x will be replaced by sigma y minus nu sigma x, जो आपके पास दूसरी दो डायरेक्शंस हैं उनकी दोनों स्ट्रेसेस यहाँ पे ऐड हो जाए. Similarly, for epsilon z, this equation will become 1 over e sigma z. Now sigma x is replaced by sigma z minus nu into sigma x plus sigma y. So these are three set of equations that we can use to find out the values of strains in x, y and z directions because of stresses in x, y and z. मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देखी हैं उनमें कुछ important parameters. They were E, that was modulus of elasticity, then modulus of rigidity, that was defining the shear strength of the material, and then nu, that is the Poisson's ratio, that was relating the strains of the material. इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक इक्वेशन में रिलेट किया गया. इसका रिलेशनशिप सिर्फ मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ. इसकी जो डेरिवेशन है वो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 2 का पार्ट है, उसमें आप इंशाल्लाह पढ़ोगे. अभी हम सिर्फ इसका रिलेशनशिप देख रहे हैं कि हाउ दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड. And this relationship can be used if you are given with only two properties and third need to be calculated. Let's suppose आपको E पता है और nu पता है, you need to find out the value of G, तो आप calculate कर सकते हैं. Or you are given with G and E and you can calculate the value of nu. तो आप ये इनमें से कोई दो वैल्यूज को यूज करके जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशनशिप.
तो ये रिलेशनशिप आप लोग फिलहाल याद कर लें, इसकी जो डेरिवेशंस हैं वो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 2 का पार्ट है। That was for Poisson's ratio. Now coming to creep. What is creep means? This is time dependent deformations, means some deformation that is continuously happening in the material for a certain period of time. Okay, एक कोई खास पीरियड है एक जिसमें डिफॉर्मेशंस कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं, तो इस तरह की जो डिफॉर्मेशंस हैं जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशंस होती हैं उनको हम क्रीप कहते हैं. So when a material has to support a load for a very long period of time, it may continue to deform until a sudden fracture occurs or its usefulness is impaired. कि suddenly break हो जाए या उसकी usefulness खत्म हो जाए, तो जिस पॉइंट तक वो मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस विल डिफाइन द क्रीप. द रेट ऑफ दिस डिफॉर्मेशन इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी, एक्सपोजर टाइम, एक्सपोजर टेम्परेचर एंड द लोड अप्लाइड. मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल किस तरह का है, कितनी डिफॉर्मेशन ले सकता है, कितनी देर तक आपने उसको एक्सपोज किया है लोड पे, एक्सपोजर टेम्परेचर क्या था. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मटेरियल की डिफॉर्मेशन बढ़ती हैं, ठीक है, तो उसमें एक एडिशनल डिफॉर्मेशन आ जाएगी अलॉन्ग विद दैट ऑफ लोड. लोड के साथ साथ टेम्परेचर की जो थर्मल डिफॉर्मेशन है वो भी आ जाएंगी. एंड द लोड अप्लाइड, कि लोड आपने कितना अप्लाई किया, उसकी कैपेसिटी से कितना इंक्रीज किया. सो दिस ऑल विल डिफाइन द क्रीप. A mechanical property associated with creep is called creep strength. क्योंकि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो हम creep strength को अगर डिफाइन कर दें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, to take care of the creep strengths. So creep strength is the highest initial stress a material can withstand during a specified time without causing a given amount of creep strength. It means you will be known or you will be given with the specified time. फर्स्ट थिंग, आपको स्पेसिफाइड टाइम पता होगा कितने टाइम के लिए आपने लोड अप्लाई किया है, एंड द अमाउंट ऑफ क्रीप स्ट्रेंथ, दिस विल बी डिफाइंड बाय सम कोड ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, कोई कोड ऑफ प्रैक्टिस है जो आपको बताएगा कि अगर कॉन्क्रीट है तो उसमें आपने 318 ACI यूज करना है, अगर स्टील है तो आपने कौन सा कोड यूज करना है. मींस देयर मस्ट बी सम कोड ऑफ प्रैक्टिस दैट इज डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ क्रीप स्ट्रेंथ. तो हमने किस चीज को कंट्रोल करना है, स्ट्रेन को. ये स्ट्रेन इतनी ज्यादा ना बढ़े कि आपके मटेरियल की यूजफुलनेस खत्म होना शुरू हो जाए. Now creep strength will decrease for higher temperatures or for higher applied stresses. जैसा मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, क्योंकि थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, थर्मल स्ट्रेन होंगी, मींस एक एडिशनल स्ट्रेन है जो मटेरियल को बेयर करनी है. सो क्रीप स्ट्रेंथ अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी. So greater the creep strength, greater will be the capacity of the material to sustain the applied loading. Coming to fatigue. When a metal is subjected to repeated cycles of stress or strain, it causes its structure to break down, ultimately leading to fracture. Means these are some kind of microscopic changes in the material. कि आप किसी material पे एक दफा load apply करते हैं, you remove the load and then you again apply the load. These are cycles of loads, repeated cycles of loads. Load is coming and removing, applying, you are applying and then removing it. तो वो एक जो repetition है उसकी वजह से जो material का structure है वो break down होता है. जैसे आप example ले लें, you are using an axe and trying to cut the wood. तो जो वुड पे आपके जो साइकिल्स ऑफ लोड्स हैं, विद रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लोड या स्ट्रेस, आप उसमें डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं आपके मटेरियल में, वो ब्रेक हो जाता है. एक खास ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो लकड़ी टूट जाएगी. दिस इज द सेम केस कि हम
साइकिल्स ऑफ लोड्स अप्लाई कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेन, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उस पर स्लाइट इंक्रीज करेंगे लोड का तो आपका मटेरियल फेल हो जाएगा. This behavior is called fatigue and is responsible for large percentage of failures in turbine plates, connections or supports for bridges and other materials subjected to cyclic loadings. ज़्यादातर अगर मैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो हमारा मेन कंसर्न क्या है, कनेक्शंस और सपोर्ट्स का, कि जो हम कनेक्शंस दे रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे साइक्लिक लोडिंग हो सकती है, उस पे हमने फटीग को कंट्रोल करना है. या जो ब्रिजेस हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पे क्योंकि साइकिल्स ऑफ लोड्स है, कि लोड कॉन्टिन्यूसली मूविंग लोड है, तो चेंज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमें उन कनेक्शंस पे और उन सपोर्ट्स पे जो ब्रिजेस के लिए हैं उन पे फटीग को कंट्रोल करना है. The nature of this failure apparently results from the fact that there are microscopic regions on the surface of the material where the localized stress becomes much greater than the average stress acting over the cross section. जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके पास एक कुल्हाड़ी है, you are using an axe to cut the wood, तो वो जो एक माइक्रोस्कोपिक रीजन है जहाँ पे आप लोड को रिपीट कर रहे हैं, ओनली दैट रीजन इज स्ट्रेस्ड. इससे पहले जो हम फोर्सेस देख रहे थे वो पूरे मेंबर के ऊपर एक्ट कर रही थी, कि आप पूरे एक मेंबर को जैसा पुल करते हो या पुश करते हो या उसके ऊपर शेयर अप्लाई करते हो, इट वाज एक्टिंग ऑन द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी. लेकिन जो फटीग है ये वो माइक्रोस्कोपिक रीजन्स के ऊपर एक्ट कर रही है जहां पे लोड के साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं. So as this higher stress is cycled, it leads to the formation of minute cracks. जैसा जैसा cracks appear होते हैं और अगर आप उस पर उन्हीं क्रैक्स पे दोबारा लोड अप्लाई करते हो तो उन क्रैक्स की ओपनिंग्स होती हैं, और उन ओपनिंग्स की वजह से जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि क्रैक्स अपीयर होना बेसिकली आपके पास वार्निंग्स आ रही होती हैं, मटेरियल इज नियर टू फेल, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उन्हीं क्रैक्स पे आप लोड इंक्रीज कर दें या रिपीट कर दें तो आपका मटेरियल फेल हो जाएगा. Occurrence of these cracks causes a further extension of the cracks into the material as the stress continues to be cycled. Eventually, the cross-sectional area is reduced to the point where load can no longer be sustained and fracture occurs. Even though the material was ductile, now it will behave as if it were brittle. आपका डक्टाइल मटेरियल भी है तो अगर उसके ऊपर ओपनिंग्स हो गई हैं, क्रैक्स ओपन होना शुरू हो गए, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी इफेक्टिव डेप्थ रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और आपका मटेरियल सडनली ब्रेक होगा. इट विल बिहेव एज इफ इट वर अ ब्रिटल मटेरियल. Now, the property that is used for controlling the fatigue is fatigue stress. In order to specify a safe strength for the metallic materials under repeated loading, it is necessary to determine a limit below which no evidence of failure can be detected after applying a load for specified number of cycles. Means ये भी specify किया गया होगा कि कितने number of cycles के बाद इस stress को आपने monitor करना है. So this limiting stress is called endurance or fatigue stress. इसको endurance stress भी कहते हैं और fatigue stress भी कहते हैं. तो इस स्ट्रेस से हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे. टिल नाउ एनी क्वेश्चंस? Is there any question बच्चे? ओके बच्चे, आप लोगों को कौन सा वीक चल रहा है? मैम 6th वीक. 6th वीक है.
ठीक है, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके मेरे ख्याल से मैं फिजिकल क्लास में ही डिस्कस करूँ। हमारे पास टाइम तो है अभी, हमने यहीं तक मतलब जो मिड का कोर्स है उसकी थ्योरेटिकल पार्ट हमने कर लिया। इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ हम मेरे ख्याल से ऑनलाइन नहीं जाते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इट्स ओके मैम। प्रॉब्लम्स करवा दूं, समझ आ जाएंगे? नो मैम, फिजिकली मैम फिजिकली कर दो। हाँ, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स को हम फिजिकल ही रखते हैं, वो फिर ऑनलाइन में काफी चीजें मिस हो जाती हैं। दो तीन मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उनकी थ्योरी मैं आपको करवाती थी, इसके न्यूमेरिकल्स मैं कोशिश करूंगी कि हम अपने कोर्स में इंक्लूड ना करें। बहरहाल मैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट आपको करवा देती हूँ, आपको नो हाउ हो, इंट्रोडक्शन है जस्ट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? It is often used to determine the stress or displacement at a point in a member when it is subjected to complicated loading. ठीक है, अभी हम सिंपल लोड्स की बात करें कि आपके पास सिर्फ एक तरह का फॉर एग्जांपल लोड है, या नॉर्मल लोड है, या शेयर लोड है, बट इट माइट बी पॉसिबल दैट योर मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ लोडिंग. So what we do in principle of superposition, we subdivide that complicated loading into components and then we apply the superposition rules. So by subdividing the loading into components, the principle of superposition states that the resultant stress or displacement at the point can be determined by first finding the stress or displacement caused by each component loading acting separately on the member, and then we sum up all of the results. जो आपके पास individual loading या individual displacements आ रही हैं उनको हम algebraically add कर देते हैं. So then the resultant stress or displacement can be determined by algebraically adding the contributions caused by each of the component. Okay, for example, आपके पास कोई एक load है in figure A. Let's suppose this is some kind of complicated load. You divide it into P1 and P2. दो तरह के loads में आप इसको divide कर देंगे और फिर आप P1 की वजह से जो stresses produce हो रही हैं वो calculate करेंगे. Similarly for strains, and then you will find out the stress and strain because of P2. और एंड में आपने इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देना. दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इसमें दो आपके कह लो कि कंडीशंस हैं जिनको हमने सेटिस्फाई करना होता है. फर्स्ट इज द लोडिंग मस्ट बी linearly related to stress or displacement that is to be determined. Means linear elastic material. In other words, in simple words, material must be linear elastic. प्लास्टिक मटेरियल्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है. सो मटेरियल मस्ट बी लीनियर इलास्टिक मटेरियल, दैट इज ओबेइंग द हुक्स लॉ. जो है हुक्स लॉ की हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू PL ओवर AE. ये आपके पास रिलेशनशिप वैलिड होगा, इसको आप यूज कर सकते हैं. Second is the loading must not significantly change the original geometry or configuration of the member. आपने ऐसा नहीं करना. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी केस की बात करूं, हमने P को डिवाइड किया था दो लोड्स में. Now this D1 and D2 must not be that smaller. ऐसा ना हो कि आप इसको इतना रिड्यूस कर दें या इतना क्लोज टू सपोर्ट लगा दें कि आपकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए. तो कॉन्फ़िगरेशन या जो बॉडी की शेप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. जितना ये लोड आप सपोर्ट के करीब करेंगे उतनी ज्यादा डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होंगी, मैक्सिमम डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होंगी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपने लोड को किस पॉइंट पे अप्लाई की है. इट मस्ट नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेंबर. If significant changes occur, the direction and location of the applied forces and their moment arms will change. तो ये दो कंडीशंस हैं जो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे अप्लाई करते हैं. Then comes the statically indeterminate members. Indeterminate members कौन से members होते हैं? Those members having the unknowns greater than
the available equations of equilibrium. हमेशा से आपने यही पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में भी आपने indeterminacy कैलकुलेट की होगी. So indeterminate member is a member that has unknown forces greater than the available equations of equilibrium. Or you may say that equations are not sufficient to determine the values of unknown forces. For example, अगर मैं ये जो figure आपके सामने draw हुई है, this is AB member, it is fixed at A and B point. क्या आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिन पे ये फिक्स्ड है. फिक्स्ड का मतलब क्या है, अगर इस पे लोड सिर्फ लीनियर एक्चुअली अप्लाई हो रहा है तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम इज ड्रॉन इन बी पार्ट. देयर विल बी अ रिएक्शन एट ए पॉइंट, दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट, and there will be a reaction at B point, that is also a fixed support. अब आपके पास जो reactions हैं, they are two reactions and you can apply only one equation of equilibrium in this case. Summation of forces in y direction. इसके अलावा आप इस पे कोई और equation apply नहीं कर सकते. This is there is only one available equation of equilibrium. Parallel force system के example है, तो आप उसमें सिर्फ एक इस वक्त equilibrium की equation use कर सकते हैं. So the second equation will be calculated using the methods that are described here. एक तो आप equation of equilibrium ले लोगे जिससे आप इसको solve करोगे, और second equation आपने define करनी है. किस तरह से define करनी है, इसको compatibility कहते हैं. equation को भी हम compatibility equation कहेंगे. So it is necessary to consider the geometry of deformation to solve such indeterminate problems. Geometry of deformation, इसका क्या मतलब है. अगर मैं इस ज्योमेट्री की बात करूं, A to B material is fixed means net deformation will be zero. हम फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या है कि ये इसको मूव नहीं होने दे रहा होगा. So from A to B total length of the material will not be changed. Net deformation will be zero. Deformation will be caused in LAC length and LCB length. लेकिन इसकी जो टोटल डिफॉर्मेशन होगी वो जीरो होगी. दिस ज्योमेट्री और दिस कंडीशन ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज कंपैटिबिलिटी, और इस कंपैटिबिलिटी को हम यूज करते हैं टू डिटरमिन द इक्वेशंस दैट विल बी यूज्ड टू सॉल्व फॉर द अननोन फोर्सेस. So such cases are called statically indeterminate and require use of additional relations that depend on the elastic deformations in the member. An equation that specifies the condition for displacement is referred to as compatibility or kinematic condition. Now for the given bar, a suitable compatibility equation would require the relative displacement of one end of the bar with respect to the other end to be equal to zero. क्योंकि दोनों ends fixed हैं. इसकी जो net displacement है from A to B, it must be zero. Now if we consider the two segments AC and BC separately,
what they are saying, अगर हम इस जो आपके segments हैं A to B, इसको आप divide कर दें in two parts. So this is A C segment and another segment is CB. ठीक है, हमने इसको दो पार्ट्स में, जैसे आप हमेशा सेगमेंट्स को कट करके देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम अगर सी पॉइंट पे इस मेंबर को कट कर दें और उसके बाद इस पे इक्वेशंस लिखें, तो हमारा जो फर्स्ट केस है, जो फर्स्ट सेगमेंट है ए सी, अगर फ्री बॉडी डायग्राम में देखें तो ए पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है एफ ए, इंटरनल फोर्स आपके पास सी पॉइंट पे इट विल आल्सो बी एफ ए. Similarly, at point B, there is force or there is reaction acting at point B. So internal force will also be FB for equilibrium. ठीक है, अगर आपने C पॉइंट से मेंबर को कट किया, मैंने डायग्राम गलत ड्रॉ कर दिया, जो इस वक्त रिएक्शंस एक्ट कर रहे हैं, they are acting inward at point B. ये फिगर आपके पास बन रही है. AC segment is in tension and BC segment is in compression. अगर मैं AC segment के लिए deformation की equation लिखूं, because this is subjected to tensile force, so equation or deformation equation will be written for AC segment will be FA, that is the force acting on the member, length of the segment AC divided by area of this segment and elasticity of the segment. And this will be positive. In second case, if I try to write equation for BC segment, so deformation in BC segment is FB into LBC divided by AE, and this will be negative because of compression. So we said that for this whole bar AB from A to B, this is 0. This total deformation is 0. So we can write deformation from A to C minus deformation from B to C is equal to 0. Sorry, plus this is total deformation. So this is FE LAC divided by AE minus FB LBC divided by AE. AE is constant because area is not changing from A to B and elasticity will also be changed because of the same material. आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, मटेरियल का क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो आपकी इक्वेशन आप उसमें AE को कांस्टेंट ले सकते हैं. From this equation, this is called compatibility equation, that is defined on the basis of geometry of the material, geometry of the member or deformation of the member. ठीक है, तो हम इसको compatibility equation कहते हैं. Now this equation contains two reactions, two unknown forces. एक unknown force FA है और second unknown force is FB. We have two unknown forces. So this is that equation that is used in combination with equation of equilibrium to determine the value of reactions. ठीक है, तो हम इन दो इक्वेशंस को, एक आपके पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, दैट इज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, और एक आपके पास इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी होगी. अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अननोन फोर्सेस.
दो अननोन फोर्सेस हैं, दो इक्वेशंस हैं, यू कैन सॉल्व द सिस्टम. This is how we write the equations of compatibility. आपके देखेंगे एक आपके पास इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी है, सेकंड आपके पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्सेस, अननोन फोर्सेस. Last topic is the thermal stresses. Thermal stresses means this is some kind of stress that is caused because of change in temperature. Okay, a change in temperature can cause a material to change its dimensions. ये बड़ी known सी बात है. आप लोगों ने हमेशा यही चीज पढ़ी होगी, टेम्परेचर के चेंज होने से मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, डायमेंशंस चेंज होती है. If the temperature increases, generally a material expands, whereas if the temperature decreases, the material will contract. So the expansion or contraction is linearly related to temperature increase or decrease. Now, if this is the case and the material is homogeneous and isotropic, it has been found from experiments that the deformation can be calculated using the formula. ये experimental result है, मीन्स थर्मल डिफॉर्मेशन आप अगर कैलकुलेट करना चाहें किसी भी मटेरियल की तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. दिस इज थर्मल डिफॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा टी इनटू एल. Alpha is linear coefficient of thermal expansion. This is also a material's property. Means ये आपको पता होगा. Material स्टील की अपनी प्रॉपर्टी है, स्टील के लिए थर्मल कोफिशिएंट क्या है, इसी तरह कंक्रीट का थर्मल कोफिशिएंट. तो जो भी मटेरियल है उसके अगेंस्ट ये मटेरियल प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करके दी जाएगी. So this alpha is known, delta T is change in temperature, starting point पे temperature क्या था, final point पे temperature क्या है. अगर ये दो values आपको पता है, you can calculate this delta T. And L is the length of the member, original length of the member. सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन. The change in length of a statically determinate member can be computed in this way, since the member is free to expand or contract when undergoes temperature changes. इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर तो आपके पास determinate member है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ. यू हैव अ कैंटिलीवर बीम. ठीक है, कैंटिलीवर बीम में क्या कंडीशन होती है, द मेंबर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड इट इज फ्री एट द अदर एंड. नाउ इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, लेट्स सपोज डेल्टा T is increasing from T1 to T2, temperature is increasing, that means this material will expand. So this deformation can be directly calculated using the formula that is alpha into delta T into L. ठीक है, इस डिफॉर्मेशन को आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. However, in statically indeterminate member, these thermal displacement can be constrained by support producing thermal stresses that must be considered in design. अच्छा, अब ये डिजाइन का पार्ट है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऑल्दो हम डिजाइन इस वक्त क्योंकि डील नहीं कर रहे तो इसको इन डेप्थ हम डिस्कस नहीं करेंगे. बहरहाल लेट्स सपोज अब इसी कैंटिलीवर बीम को अगर हम कंसिडर करें एंड वी इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री एंड, हम इस एंड को फिक्स कर दें और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो क्या होगा कि दिस मटेरियल विल बी एक्सपैंडिंग बट इट विल एक्सर्ट सम स्ट्रेस ओवर हियर. ये फिक्स सपोर्ट्स हैं इन पे, क्योंकि एक्सपैंड तो होगा, मटेरियल है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट विल एक्सपैंड. इसके एक्सपेंशन की वजह से जो सपोर्ट्स, फिक्स सपोर्ट्स हैं, दे विल बी फेसिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस. सो दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस. ये थर्मल डिफॉर्मेशन तो हमें पता है कि उसमें किस तरह से आपने कैलकुलेट करनी है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लगा दी हैं, यू आर नॉट अलाउइंग द मटेरियल टू एक्सपैंड और कंट्रैक्ट, तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी. इन थर्मल स्ट्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए हम एक्सपेंशन जॉइंट्स देते हैं. हम क्या करते हैं कि हम जितनी ये थर्मल
डिफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, लेट्स सपोज ये थर्मल डिफॉर्मेशन आपने कैलकुलेट की है एंड इट इज 0.2 इंच, लेट्स सपोज। तो हम ये 0.2 इंच अपनी जो फिक्स सपोर्ट्स हैं दोनों, इन दोनों फिक्स सपोर्ट्स के बीच में ये एक्सपेंशन जॉइंट्स डिजाइन कर देंगे। ये अलाउ करेंगे कि मटेरियल इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग तो मटेरियल एक्सपैंड हो सके। Okay, so these are called expansion joints and these are given to control the thermal stresses. आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसमें अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आए तो बल्कि ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको अक्सर बिल्डिंग में जॉइंट्स नजर आते हैं। These joints are given to take care of the expansions. और अगर किसी केस में हम ये एक्सपेंशन जॉइंट्स ना दे पाए, क्योंकि लाजमी नहीं होता हर दफ़ा हमें इस तरह की सिचुएशंस मिले, हो सकता है वी आर नॉट allowed to provide the expansion joint or it is not feasible to permit the temperature deformations, तो उस केस में जो ये इंटरनल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी जिनको हम थर्मल स्ट्रेसेस कह रहे हैं, उनको भी डिज़ाइन में कंसिडर किया जाता है और डिज़ाइन फिर उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, अगर आप उसको अलाउ नहीं कर सकते कि मटेरियल एक्सपैंड करे या कॉन्ट्रैक्ट करे, तो फिर हम उन स्ट्रेसेस को जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, उनको फिर अपने डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं और अपने मटेरियल्स को अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जी, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम फिजिकल क्लास में करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट आपका जितना मिड तक आना था वो हमने कंप्लीट कर लिया। I guess there is no question. Okay, I have downloaded your attendance. अगर कोई सवाल नहीं है, you may leave the class.